My dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today I have prepared a detailed set of MCQs from the poem Sailing to Byzantium by William Butler Yeats. These questions, these MCQs cover important aspects of the poem and are designed to help you prepare effectively for your upcoming examinations. I hope this presentation proves to be very helpful and beneficial for your studies. Now let's begin. Now before starting these MCQs, I must tell you that Sailing to Byzantium expresses Yeats' feelings about old age and the desire for spiritual immortality. ये ओल्ड एज के बारे में और स्पिरिचुअल इमोर्टैलिटी इटर्निटी के बारे में बात करता है और ख्वाहिश का इजहार करता है. Then he contrasts the physical world of youth and pleasure with the eternal world of art and spirituality. Byzantium, the very place, symbolizes a place of perfect art, beauty and immortality. वो क्यों बाइजेंटियम जाना चाहता है? क्योंकि बाइजेंटियम सिंबल है परफेक्ट आर्ट, ब्यूटी और इमोर्टैलिटी का. So the speaker wants to leave the world of aging and become part of eternal art, like a golden bird which is mentioned in the poem. So the poem shows that the body grows old and dies, but art and soul can live forever. ये थीम है, ये मेन थीम है कि इंसान का जिस्म जो है वो बढ़ता जाता है, ग्रो करता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर एंड पे इंसान मर जाता है, लेकिन ये फिजिकल डेथ होती है, जबकि आर्ट जो है अ पीस ऑफ आर्ट और इंसान की जो सोल है वो हमेशा जिंदा रहती है. Now, number one, Sailing to Byzantium was published in, you must remember that this poem was published in 1928. Number two, the poem primarily reflects Yeats' concern with political revolution, romantic love, old age and immortality, nature's beauty. तो जाहिर है सेलिंग टू बाइजेंटियम वो बाइजेंटियम इसीलिए जाना चाहता है कि वो इटर्निटी हासिल करना चाह रहा है. So poem deals with old age and immortality. Then Byzantium in the poem symbolizes, देखिए वो क्यों बाइजेंटियम जाना चाहता है कि बाइजेंटियम ओल्ड में बाइजेंटियम जो था वो कॉन्स्टेंटिनोपल था, ठीक है, तो बाइजेंटियम जो है इट इज अ प्लेस ऑफ स्पिरिचुअल एंड आर्टिस्टिक परफेक्शन. वो इसीलिए बाइजेंटियम जाना चाह रहा है कि वहां पे आर्ट और आर्किटेक्चर जो है उस पर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है. वहां पे अभी भी पुराने ग्रीक माइथोलॉजी में के ग्रीक्स के ओल्ड ग्रीक्स के जमाने के चीजें वहां पे अब भी मौजूद हैं और उसी तरह से खूबसूरत हैं और खुशी देती हैं. Number 4, the poem is written in which stanza form? Now you must know that poem is written in, whether it is written in heroic couplets, ottava rima, terza rima or free verse. So the correct option is the poem is written in ottava rima. ओटावा रीमा आपको पता होना चाहिए कि इटालियन स्टैंजा फॉर्म होती है मेड अप ऑफ 8 लाइंस. एक स्टैंजा के अंदर 8 लाइंस होती हैं और फर्स्ट जो 6 लाइंस हैं उनकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी ए बी, और जो लास्ट 2 लाइंस होती हैं कपलेट जो होता है उसकी राइम स्कीम होती है सी सी. सो द पोम इज रिटन इन ओटावा रीमा जिसमें एक स्टैंजा की 8 लाइंस होती हैं. फर्स्ट 6 लाइंस की जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी ए बी होती है और लास्ट 2 लाइंस जो कपलेट होता है उसकी राइम स्कीम सी सी होती है. Number 5, the reference to gold mosaic alludes to Roman architecture, Byzantine religious art, Egyptian pyramids or Persian carpets. Definitely the answer is Byzantine religious art. Number 6, the golden bird in the poem represents, ये जो golden bird का जिक्र हुआ है ये last stanza में किया गया है. If you remember, the speaker says that he wants to be gathered into the artifice of eternity
and become like a golden bird made by, ये ग्रेशन गोल्डस्मिथ्स ने बनाया हुआ है ये गोल्डन बर्ड. इसने बहुत सारे किंग्स को देखा हुआ है, इसने बहुत सारी आर्ट है, पीस ऑफ आर्ट है ये, जिसने बहुत सी एजेस देखी हैं, बहुत से ये पुराने जो ग्रेशियन गोल्डस्मिथ से इन्होंने ये गोल्डन बर्ड बना के यहाँ रखी है, जिसने सारे किंग्स को भी देखा है, एम्परर्स को भी देखा है, गवर्नमेंट्स को देखा है, रूलर्स को देखा है, बहुत सी जनरेशंस को देखा है. इट स्टिल लिव्स. वो जनरेशंस चली भी गई, वो किंग्स उनकी डेथ्स भी हो गई, और न्यू जनरेशन तक ये गोल्डन बर्ड आज भी यहाँ पे मौजूद है. इट इज अ पीस ऑफ आर्ट दैट गिव्स प्लेजर फॉरएवर. So the golden bird in the poem, it is artificial. ये artificial है लेकिन eternal है, ये बात याद रखें. वो poet imagine करता है कि it sings forever to the lords and ladies of Byzantium. ये हमेशा गाती रहती है और लॉर्ड्स और लेडीज को खुश करती रहती है. It shows Yeats' idea that art lasts forever but human life is temporary. So the golden bird in the poem represents immortal art. Number 7, the golden bird was created to entertain common people, keep a drowsy emperor awake, fly freely in nature, worship God. So the answer is keep a drowsy emperor awake. It sings forever and keeps the kings and queens and ladies and lords of Byzantium fresh and awakened forever. The sages standing in God's holy fire refers to Greek philosophers, Christian saints in mosaics, Roman soldiers, or Egyptian priests. So the answer is Christian saints in mosaics. He means by it that he wants spiritual teachers, sages, wise people हैं पुराने ज़माने के, Christian saints को रेफर कर रहा है कि वो बहुत wise लोग थे, वो spiritual teachers थे. तो so he wants those spiritual teachers, those Christian saints to help him leave the physical world and become part of eternal and divine art. Number 9, that is no country for old men, refers to Ireland, a land of youth and sensual pleasures, Byzantium, or England. Option B is correct, a land of youth and sensual pleasure. That wise and old people are misfit in the world of youth and sensual pleasures. Number 10, an aged man is but a paltry thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपने इस पे गौर करना है. ये सेलिंग टू बाइजेंटियम में ये मेंशन किया गया है. एन एजेड मैन इज बट अ पाल्ट्री थिंग. इट सजेस्ट रिस्पेक्ट फॉर ओल्ड एज, फिजिकल वीकनेस ऑफ ओल्ड एज, political power, or wisdom of youth. So correct option is physical weakness of old age. Next is soul clap its hands and sing. Like soul is very happy. It is an example of irony, personification, metaphor, hyperbole. Clapping hand and singing is the human quality. So soul is given a human quality. It has been personified by the poet. So this is which literary device is used here? Personification. Next is consume my heart away, shows the poet's desire to destroy love, remove sensual desires, die physically, or become a king. Consume my heart away, because heart is the center of desires and wishes and sentiments and emotions. तो पोएट कहता है कि मेरे जो दिल के अंदर वर्ल्डली जो डिजायर्स हैं, वर्ल्डली विशेस हैं, ख्वाहिशें हैं, उनको खत्म कर दिया जाए. सो कंज्यूम माई हार्ट अवे, इट मीन्स रिमूव सेंशुअल डिजायर्स फ्रॉम माई हार्ट. Next is, once out of nature, I shall never take my bodily form from any natural thing. It indicates rebirth in nature, complete rejection of physical life, love for nature, political revolution. So complete rejection of physical life, ये पूरा थीम है इस पोम का. आपने अगर एक दफा माइंड में रख दिया तो ऑप्शंस आपको खुद ब खुद आप जो है वो गेस कर लेंगे करेक्ट ऑप्शन का, कि ये फिजिकल लाइफ को रिजेक्ट करता है और स्पिरिचुअल लाइफ, इटर्निटी को सपोर्ट कर रही है पोम. Byzantium is mainly a simile.
it's a symbol, it's alliteration और irony. As in the previous slide, we have done it कि Byzantium जो है वो symbol है किस चीज का? Art का, eternity का symbol है. Number 15, the contrast between youth and old age is an example of imagery, paradox, antithesis, metonymy. So, what is antithesis? Antithesis जो literary device है जिसमें दो opposite ideas जो होते हैं या contrasting ideas, they are placed together in one line or in a sentence to highlight their difference. उनके डिफरेंस को हाईलाइट करने के लिए या उसको प्रोमिनेंट करने के लिए एक ही लाइन में दो ऑपोजिट चीजें डाली जाती हैं और यहाँ पे यूथ एंड ओल्ड एज को लाइन में यूज किया गया विच इज कॉल्ड एंटीथीसिस. Next is fish, flesh, or fowl is an example of and which literary device is used in a sentence? Fish, flesh, fowl. Fa, sound of fa. So it is clearly an alliteration. The journey to Byzantium symbolizes physical travel, political migration, spiritual quest for immortality, or war. So option C is correct. Spiritual quest for immortality. यही theme है इस poem का. So you can easily guess the answers whatever they give you in your paper. The poem's tone is humorous. Definitely not. Romantic नहीं है. एंग्री नहीं है बल्कि मेडिटेटिव एंड फिलोसॉफिकल है. इटर्निटी की बात हो रही है, स्पिरिचुअलिटी की बात हो रही है. सो डेफिनेटली इट इज मेडिटेटिव एंड फिलोसॉफिकल. Number 19, the poem suggests that art is superior to nature. Art क्यों nature के ऊपर superior है? Because art is immortal. यानी ओल्ड ग्रेशियन आर्ट, गोल्डस्मिथ्स की बनाई हुई चीजें, आर्ट एंड आर्किटेक्चर आज भी जिंदा है. इसने कई जनरेशंस देखी हैं, जनरेशंस गायब हो गई हैं दुनिया से, लेकिन आर्ट और आर्किटेक्चर के नमूने आज भी मौजूद हैं और दुनिया को खुश कर देते हैं और आंखों को भले लगते हैं. Number 20, the transformation into a golden bird reflects Yeats' belief in, again, artistic permanence. W.B. Yeats की ये डिजायर है कि उसको भी इस गोल्डन बर्ड में चेंज कर दिया जाए. यानी वो क्योंकि ये जो गोल्डन बर्ड है इट्स अ सिंबल ऑफ आर्टिस्टिक परमानेंस. 21, an aged man is but a paltry thing. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. paltry thing means weak, physically weak. ठीक है, ओल्ड मैन जो होता है, एजेड मैन जो होता है, वो फिजिकली वीक होता है. So if you are asked from which poem this line is taken, so definitely a sailing to Byzantium. An important message at the end, don't forget to like, share and subscribe it. I'll be highly grateful to you. Thank you and goodbye.